हाँ जी, hello and welcome friends. So today is part 2 of intelligence. In the last class we have discussed about what is intelligence and the various debates related to it. Basically the very definition कि हम इंटेलिजेंस बोलें किसको, किस चीज़ को हटाएं और किस चीज़ को उसमें शामिल करें. We have also discussed about some debate related to nature and nurture sort of thing. And then we discussed about बिने अल्फ्रेड बिने ने जो टेस्ट डेवलप किया था इंटेलिजेंस का वो. एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट आईक्यू एंड द बिने टेस्ट लिमिटेशन बेसिकली, है ना, द मेंटल एज एंड ऑल दीज कंसेप्ट. सो मूविंग फॉरवर्ड, बट एक छोटा सा जो है करेक्शन, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस करा था आपसे, एक टर्म यूज में लिया था एपिजेनेटिक्स, है ना. तो वो एपिजेनेटिक्स इज अ डिफरेंट टर्म ऑल्दो इट ऑल्सो स्टडीज द जीन्स, लेकिन जो करेक्ट टर्म है दैट इज यूजेनिक्स. ओके, व्हाट डज इट मीन बाय यूजेनिक्स? तो यूजेनिक्स को जो यूजेनिक्स का लिटरल मीनिंग होता है गुड बर्थ, गुड बर्थ. एंड दैट कंसेप्ट हैज बीन गिवन बाय फ्रांसिस गैल्टन. एंड एक साइकोलॉजी का एक कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर मैं आपसे पूछूं, जिसने इनडायरेक्टली फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन, रेसिज्म और यहाँ तक कि नाजी पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस किया है? नाजी पॉलिसीज का मतलब यू हैव मस्ट हैव हर्ड अबाउट द हिटलर जर्मनी, हॉलोकॉस्ट और वो सारा की सारा दैट वाज अ पार्ट ऑफ द नाजी पॉलिसी. एक कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है? तो देयर माइट बी सम पीपल माइट से prejudice, obedience and group pressure and all that thing, that all concepts from social psychology. But one of the very important very important thing which actually influenced very indirectly and very fundamentally of the Nazi policies are intelligence testing. So what is intelligence testing and what is the relationship between eugenics and intelligence testing? I am just telling you, it might not be very much exam oriented, but it is very important to understand. यूजेनिक्स का मतलब होता है कि selective breeding of those genes which are good, and how these good genes can be transferred from one generation to another generation. Okay, so that's what the literal meaning is, a good birth. Okay, तो बेसिकली फ्रांसिस गैल्टन ने ये आइडिया दिया था, एंड ही वाज आल्सो द कजन ऑफ चार्ल्स डार्विन. यू मस्ट हैव हर्ड द चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने जो है वो पूरा एवोल्यूशन और basically survival of the fittest and all these things they basically he has talked about. तो गैल्टन साहब ये मानते थे कि अगर हम, जो लोग एकदम स्वस्थ हैं, फिजिकली मेंटली इंटेलिजेंट हैं, अगर हम उन्हीं लोगों की आपस में शादी करवाएं और उनका प्रोक्रिएशन हो, मतलब जिस तरीके से जीन्स आगे बढ़े, और किस तरीके से हम जो बीमार लोग हैं, अस्वस्थ लोग हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी, किस तरीके से उनको हटाएं, अंडरस्टैंड. तो ऑटोमेटिकली जो जीन्स हैं उनमें सुधार आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, और आगे जाके एकदम स्वस्थ जो है पॉपुलेशन को हम क्रिएट कर सकते हैं. दैट वाज बेसिकली द बेस. तो ये नहीं है कि फ्रांसिस गैल्टन ने जर्मनी में चीज स्टार्ट करी, ऑलरेडी कुछ यूरोप के पार्ट्स में और अमेरिका में दैट यूजेनिक्स वाज द कॉन्सेप्ट व्हिच वाज टेकिंग पॉपुलर गेनिंग पॉपुलैरिटी. कुछ डिफरेंट असाइलम्स बन गए थे जहाँ पर, दैट्स व्हाट वी से, कि अगर हम साइकोलॉजी की हिस्ट्री देखें, कि हिस्टोरिकल रूट्स देखें कि कहाँ से ये उठी है, तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि कितना ज़्यादा स्टिग्मेटाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन था मेंटली इन लोगों के लिए, है ना, और किस थोड़े भी जो है वो अस्वस्थ लोगों के लिए. तो इस तरीके से कुछ असाइलम बन गए थे जहाँ पे फोर्सफुली लोगों को रखा जाता था, बांध के रखा जाता था, मारपीट करी जाती थी और बहुत ही इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया जाता था उन लोगों के साथ. दोज हु हैव
काइंड ऑफ यू नो, और वो किसी भी तरीके की बीमारी की, अगर हो सकता है कि वो थोड़ा सा हकलाता हो केवल, है ना, और हो सकता है किसी को, हो सकता है कि चलने में दिक्कत हो सकता है कि किसी का आईक्यू थोड़ा सा कम हो, और एक्सरसाइज है डिफरेंट डिफरेंट, जहाँ पे भी उनको थोड़ा सा एक जनरल मेंटल एबिलिटी कम लगी और उनको वहाँ पे रख दिया जाता था। तो वो आइडिया फैलते फैलते जर्मनी तक आया। उन्होंने जो है फोर्स स्टेरिलाइजेशन करना स्टार्ट किया, कि किस तरीके से अस्वस्थ लोगों को हम जो स्टेरिलाइज कर ले, जिससे कि वो आगे ही संतति ही ना कर पाए, अपने जीन्स को ट्रांसफर ही ना कर पाए। ठीक है, लाइकवाइज इस तरीके से। और उसके बाद धीरे धीरे ये प्रोसेस चला। फिर धीरे धीरे कैसे इसमें कोई भी आइडिया जब कहीं से स्टार्ट होता है तो हम सोचते हैं बहुत छोटा है, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है तो किस तरीके से वो अपने एक्सट्रीमिटी में आता जाता है। then it came into the racism, and then you know one race is supreme and another is like you know ये तो फिर हम देखते हैं कि ज्यूज और आर्यंस और वो सारा के सारा, उसके बेसिस पे जो है वो हॉलोकॉस्ट की सारी पॉलिसीज डेवलप हुई। बट स्टार्टिंग वाज व्हाट, इंटेलिजेंस टेस्टिंग, इंटेलिजेंस टेस्ट करके हम ये पता लगाएं कि किन लोगों की आईक्यू कम है, कौन कमज़ोर हैं, उनको अलग रखा जाए। उसके बाद किस तरीके से उनको कल्मिनेट किया जाए, और जो है इंटेलिजेंट जिनकी आईक्यू बहुत ज़्यादा है और फिजिकली वो बहुत स्वस्थ है, उनको उनके जीन्स को एक दूसरे के साथ वो करके और आगे ट्रांसफर किया जाए। दैट वाज बेसिकली द थिंग। तो इंटेलिजेंस इज अ वेरी क्रूशियल कंसेप्ट, एंड व्हाट इट्स डेफिनेशन स्टिल डिबेटेबल कि इंटेलिजेंस की सही डेफिनेशन है क्या। बिकॉज अर्लियर इट स्टार्टेड विद द चिल्ड्रंस। हम देखते हैं कि जो बिने साहब ने जो टेस्ट डेवलप किया था वो केवल चिल्ड्रंस के ऊपर था, और वो थोड़ा सा एकेडमिकली ज़्यादा फोकस था। बट लेटर ऑन वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड, और अभी हम आगे कुछ थ्योरीज की बात करेंगे खासकर गार्डनर के, तो उसमें देखेंगे कि इंटेलिजेंस इज नॉट जस्ट लिमिटेड विद द mathematical or verbal or analytical skills, it is much more than that. In the last class we have discussed about the case, say why kind of one farmer who is completely uneducated but who through his experiences can recognize the weather patterns, the quality of the soil, have a good marketing skills so that he can sell his product to the, you know, all kind of thing. So what is intelligence would be very difficult to basically define, you know, and that's in that way. So because life is too multidimensional. Okay, so one person might be good at one thing but might not be good at other thing, and every person cannot be good at everything. Unfortunately, what we did is we have associated intelligence within academics, within IQ, and because of this we see the fierce competition in academics, and you know kind of कि किसके मार्क्स कितने ज़्यादा है, कितनी परसेंट है, CGPA कितना है, that gives us the tag of being intelligent, but it is not. It might be one aspect, but it is not. It does not guarantee the success. Are you getting? Or on the other hand, the person who is unable to get good marks in academics does not mean he is not intelligent. Okay, that is very 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 important, which we must learn. You all have seen, I think, the movie Tare Zameen Par. So that is basically intelligence. Is even that person, this Ishan Avasthi, struggles with the writing. He had a dyslexia, but even after that he has a very good creative intelligence or a artistic intelligence in that. Fine. तो ये सारी थोड़ा सा बातें हैं इंटेलिजेंस। और भी अभी तो जो है वी टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, सो अब ये भी बड़ी मज़ेदार बात है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, व्हेन वी हैव accepted, and it is the fact that now the machines are also intelligent. They can think, they can analyze, they can recognize the patterns, they have where they can solve the complex puzzles and everything. So can we call, say, the chat GPT or the cloud an intelligent system? Yes, we can say an intelligent system. But does are these more intelligent than humans? That is also very debatable, because some people also talks about human has one important aspect which the machines does not have, and that is the consciousness.
And when we're talking about consciousness, it also gives us a sense of we can experience and feel the things which the machine cannot. They might talk in such a way that they sounds like an empathetic, understand, but they are not really, understand, they cannot feel, they cannot have a salience, they does not have that I-ness within them, which we all have, which we all possess. Me, I, who I am. Understand? We all human have an individual I-ness, which the machines might not have. So they may, when you talk to a machine, yes, it can solve the problems. It has a very good abito. If you talk to the chat GPT, if you talk to cloud, if you work with different AI systems, they are super intelligent. The humans, which the humans took around multiple days, they can finish just in the minutes. So no doubt about what we are so called calling intelligence. But if we talk intelligence as something which is much beyond than the intellectualism and the brain, this very sense of feeling, this very sense of experiencing the things, which is in that terms, we cannot call them intelligence. Are you getting the point? So that is a very the debate basically. So अगर हम इन उस इंटेलिजेंस में हम जिस चीज़ को इंटेलिजेंस बोल रहे हैं, अगर हम उसमें इमोशंस को, फीलिंग्स को और एक्सपीरियंसेस को भी काउंट करें, तो these what we called as these machines will always remain inferior to the humans. They cannot equate with the humans.